So आज ये नेट रो क्वेश्चन करियो एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पले ये नेट क्वेश्चन ओके एटा होची यूनिट आउ डायमेंशन चैप्टर आछे क्वेश्चन पढिबा पले कोन अछि तापर हम सॉल्व करिबा इफ एनर्जी E, velocity V and time T are chosen as the fundamental quantities the dimensional formula of surface tension will be ताले कोन होची देखो एनर्जी वेलोसिटी और टाइम ए होची फंडामेंटल क्वांटिटी बोली हमें चूज करछ ताला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन रो कोन हबो तो सरफेस टेंशन और डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म ऑफ एनर्जी वेलोसिटी और टाइम रो कोन हबो हमें बाहर करिबा ठीक अछि तो ऑप्शन ए देखो बी और सी डी तो ये चारिटा ऑप्शन भितर को ऑप्शन टा एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें बाछिबा ठीक अछि आको हमें सॉल्व करियो पहिले तो देखो केमते सॉल्व करिबा को एटी हमें डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन फर्स्ट जानिया दरकार कहना डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इक्वल टू दे देछि तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन ऑफ फार्मूला के जानिया दरकार सरफेस टेंशन को एस नो अछि तो सरफेस टेंशन ऑफ फार्मूला कोन ना सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ तो सरफेस टेंशन ऑफ फार्मूला होची फोर्स पर यूनिट लेंथ ठीक अछि एबे यार डायमेंशन बाहर करिवा डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स divided dimension of length so dimension of force is nothing but m1 l1 t to the power minus 2 dimension of length is l1 now we get m1 l0 t to the power minus 2 this is the dimension of surface tension now we have to calculate the dimension of energy dimension of velocity and dimension of time so dimension of energy that is E dimension of energy is nothing but so m1 l2 t to the power minus 2 this one the dimension of energy now dimension of velocity that is V so dimension of velocity is nothing but mass term is 0 l1 t to the power minus 1 dimension of velocity dimension of time so the dimension of time is nothing but mass term is 0 length term is 0 time term is present so 1 this is the dimension time now the question is the dimensional formula of surface tension how much so we assume dimension of surface tension so dimension of surface tension is equal to dimension of energy to the power A dimension of velocity to the power B dimension of time to the power C A B C are unknown quantity where here A B and C are unknown quantities okay now we have to calculate A B C what is the value of A and B and C we have to find it okay now substitute the value of dimensional value of S that is surface tension dimensional value of energy dimensional value of velocity dimensional value of time we have to substitute it okay so how much the dimensional formula of surface tension that is dimensional formula of surface tension is m1 l0 t to the power minus 2 this is the dimensional formula of surface tension is equal to energy dimension of energy is nothing but m1 l2 t to the power minus 2
of power is A. Dimension of velocity m0, L1, t to the power minus 1 to the power B. Dimension of time, mass term 0, length term is 0, time term 1 to the power C. Okay. Plus 2 is equal to now. So in case of here M A, M0 and C0 and length term is 2A. Now multiply 2 into A, 2A, here plus sign, plus B and length term is 0, that means C term here minus 2, multiply 2 into A, minus 2, 2A, and B term is minus B, here minus 1 into B, minus B, C term plus C, this is. Okay. Equate the power. Equate the powers of M, L and T from both sides. What shall we get? So we get here 1 M is equal to for 1 for mass M term. So here M is equal to 1 here, equating the power 1 and A, that is 1 is equal to A. Therefore equal to 1. So the now we have to find the value of B. Okay, that is for length term. For L, so L equal to, so power equating the power is 0. 0 equal to, this term is 2A plus B. Put the value of A, put the value of A in the above equation. Now substitute the value of A in this equation. We have to calculate A is equal to how much? 1. A is equal to how much? 1. Now substitute it. Okay. So 0 is equal to 2 into value of A is equal to 1 plus B. So B is equal to minus 2. B is equal to minus 2. Now we have to find the value of C. Okay, the C for T. So now equating the time power. Time power is minus 2 here, the minus 2. So minus 2 is equal to, then time power is minus 2A minus B plus C. That is minus 2A minus B plus C is equal to minus 2. Okay. Put the values of A and B in the above equation. Okay. What shall we get? 2 into 1 minus B is minus 2 plus C is equal to minus 2. That is 2 plus 2 plus C is equal to minus 2. We cancel, C is equal to minus 2. Okay, that's C of value minus 2. So therefore A is equal to 1, B is equal to minus 2, C is equal to minus, C is equal to minus 2 also. Okay. So our final result is dimension of surface tension is equal to E to the power, that is A means 1, V to the power B means minus 2, T to the power C means minus 2. So we get E to the power 1, V to the power minus 2, T to the power minus 2. So our correct answer is option A is correct. Okay, option A is correct. ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି NEET ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ ଅଛି। ତ NEET ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମେନସନ୍ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏ ହଉଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମେନସନ୍ ଚାପ୍ଟର। ପିଲା ଦେଖ ଏଇ ବହୁତ ବଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଆର ଆନ୍ସର ଟି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍।
क्वेश्चन कौन अच्छी भल भाव पढ़िया पड़ो। तो एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी। तेणु ये कौन होची एनर्जी वेलोसिटी और टाइम होची माने फंडामेंटल क्वांटिटी। एबे डायमेंशन हमें बी बाहर करबा। ओके एबे हमें कौन बाहर करबा ना डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन हमें डायमेंशन बाहर करबा इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी ई वी एंड टी। सो फास्ट मु कौन कली ना सरफेस टेंशन रो लिखिली। सरफेस टेंशन फॉर्मूला होची कौन फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक अछि सरफेस टेंशन फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखिली। तापर हम सरफेस टेंशन मु डायमेंशन बाहर करले। तापर कौन करले डायमेंशन ऑफ एनर्जी रो डायमेंशन बाहर करले। तब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी रो डायमेंशन बाहर करले। टाइम रो डायमेंशन बाहर करले। तापर हमें अज्यूम द रिलेशन हमें कौन कलु s इज इक्वल टू e टू द पावर a v टू द पावर b t टू द पावर c कले। a b c आर टू अननोन फिजिकल सॉरी अननोन क्वांटिटीज हमें फाइंड करबा a b c रो वैल्यू हमें बाहर करबा। तापर देखो मु स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर्मूला पुट करली। तापर पावर को इक्वेटिंग करी मु आंसर बाहर करली। ओके यदि वीडियो टी भल लागिथिबा लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करियो भूलिबो नहीं। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। थैंक यू।